हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हमारे प्यारे से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। ओके, लिविंग वर्ल्ड। उसका एक्सरसाइज देखेंगे कि आप लोग ने समझ तो लिए होंगे, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम होगा वो आज हमारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और हम किसका देख रहे हैं? हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का देख रहे हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे 11th क्लास का है। ओके, चलिए बायोलॉजी के इस प्यारे प्यारे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आ जाइए और सबसे पहले आपको पहला दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन ए ये है कि विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी जो है डी के राइट है। उसके दूसरा है बी, अ पर्टिकुलर प्लांट इज स्ट्रिक्टली सीजनल प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड इफ इट इज टू बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। तो आंसर लिखेंगे आप हेर्बेरियम। चूज द करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर सी है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फाउंड टू cockroaches in the classroom. They had a debate whether they are live or dead. Which life property will help them to do so? तो आप आंसर लिखेंगे इरिटेबिलिटी। हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क विच रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तीनों में आपको डिफरेंस बताना था कि बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो सबसे पहले हम बोटानिकल गार्डन का देखते हैं। प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर grown in vivo in a scientific and systematic manner in a botanical garden. It is a type of acute conservation. It is related to conservation of various flora. अब देखेंगे जूलॉजिकल पार्क का। तो जूलॉजिकल पार्क्स आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैपिटिविटी. इट इज टाइप ऑफ एक्यूट कंजर्वेशन. इट इज रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस फ्योना. उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज एन assemblage of species that form self-sustaining communities on degraded landscape. It is a type of situ conservation. It is related to conservation of all biodiversity. तो ये आपका आंसर है। डिफरेंस बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बेटर होगा, या तो फिर वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड भी हमारा डिफरेंस कंप्लीट हुआ। थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है जीजा माता उद्यान द फेमस जू इन मुंबई हैज एसिलिमेटेड ह्यूम्बोल्ट पेंगुइन्स। व्हाई शुड पेंगुइन्स बी एसिलिमेटेड when kept at a place away from their natural habitat? तो आंसर लिखेंगे Humboldt penguins are kept in temperature monitored chambers. Their food and habitat is maintained as per their natural habitat. This has made the acclimatized to be condition of the zoo. If such care is not taken, penguins will not be able to survive in Mumbai climates, have higher temperatures and humidity. This condition will cause death of penguins. Hence, they are acclimatized. ओके, सेकेंड क्वेश्चन अब आपको दिया गया है रिया फाउंड पेक्यूलर प्लांट ऑन हर विजिट टू हिमाचल प्रदेश. व्हाट आर द वे शी कैन शो इट टू हर बायोलॉजी टीचर एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट? आंसर लिखेंगे रिया कैन प्लग द प्लांट एंड take it to her teacher after preserving it in the form of herbarium, but this is not advisable as it destroy local biodiversity. Hence she can click pictures of the plant and take it to her teacher. Also by keen observation the detailed structure of the plant can be noted. Question number C है at Andaman authorities do not allow tourists to collect shells from benches. Why it must be so? आंसर लिखेंगे seashells are an important part of the coastal ecosystem and are crucial for the survival of various marine creatures. They provide material for building nest of bird and also act as substrate
tractum for attachment of algae, seagrass, sponge, and various microbes. Fishes use shells for hiding from predators, whereas hermits, crabs use shells as temporary shelters. Removal of seashells from seashores may also indirectly affect the rate of uh, shoreline erosion. Hence, in an attempt to protect the ecosystem, authorities in Andaman do not allow tourists to collect shells from beaches. D है why do we have greenhouse in botanical garden? आंसर लिखेंगे when tourists collect the shells from beaches it causes loss of biodiversity. Some shells may contain animals inside. This should be therefore avoided. By impact of tourists, the natural ecosystem is also disturbed. There may be illegal trade of the collected shells and specimens. Therefore, authorities do not allow tourists to do so. Question E है what do you understand from terms like in situ and ex situ conservation? आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम इन सीतु का लिखेंगे. इन सीतु कंजर्वेशन इट includes conservation of species in their natural habitats, grazing, cultivation, and collection of products from the forest in banned in such areas. Legally protected areas include national parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves. उसके बाद एक्स सीतु में लिखेंगे एक्स सीतु कंजर्वेशन इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ species outside their natural habitats. Species are conserved in botanical garden, cultural collections, and zoological parks. Next है आपको क्वेश्चन नंबर 4. राइट शॉर्ट नोट्स. ए है रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. आंसर लिखेंगे ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमन हैव overutilized natural resources leading to degradation of the environment and hence only humans can help conserve the ecosystem. Humans are capable of conserving and improving the quality of nature and thus can play a major role in biodiversity conservation. In order to conserve biodiversity and its environmental resources, humans must use the resources rationally and avoid excessive degradation of environment. Human beings are stakeholders of the environment and need to come together to overcome population and improve the environment quality in order to conservation biodiversity. Example ban or limit on use of harmful products, plastic, chemicals, etc. There are toxic to various bird, animal, etc. Human beings also play a role in conservation of biodiversity by establishment of various sites from in situ national park, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves, and ex situ botanical garden, culture collections, and zoological parks conservation. सेकेंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन. आंसर लिखेंगे लोकल फ्लोरा is recorded in the botanical garden. There is collection of monographic works, living plant material and preserved specimens which are needed for studies and research are kept in collection here. Seeds and plants can be supplied from botanical gardens. A greenhouse is maintained from the cultivation of rare and uncommon plants. There is research laboratory associated with some of the botanical gardens. Fifth question है how can you as an individual prevent the loss of biodiversity. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. आंसर लिखेंगे as individuals we can prevent loss of biodiversity in the following ways. First है increasing awareness about environmental issues, making posters that provide more information about biodiversity conservation to raise public awareness. Increased support and or active participation in government politics and action lead down from conservation of biodiversity. Protect various plant and animal species in our surrounding. Set up bird and bat house wherever possible. Prevent felling of trees, especially native plants or trees in a particular area.
Reduce, recycle and reuse resources, especially reduce pollution and use of plastics, bags and other materials that are potential threats for the environment. Use environment friendly product, segregate and dispose garbage correctly. Convince people about the importance of tree and the need to participate in tree plantation campaign. Obey the rules that fall under Biodiversity Act. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, उसमें जितने भी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिया. सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आपको फिर अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या फिर अलग चैप्टर का, तो आप वो भी पूछ सकते हो. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोस मिल जाए. ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको, कोई पैसे देने नहीं, बस सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़े रहिए. ठीक है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपका 11th बेस अच्छा होगा, तभी आपके जो 12th है अच्छा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ.